This is exercise 3B D1 updated 7th edition. This is the new edition, and over here question number 4 stated is in a school scholarship is given out to the top 10 students within each level, and the whole statement is given in the book. I did not write the whole statement. I'll be talking about the solution part of the question. But before that, there is a statement. There was an increase in the value of award from 2008 to 2009 for each category, like for top 5% student and for the next 5% student. There is an increase of the value of the award by 30%. The table is shown in the book, and the question number first set is given that there was an increase of 30% in the value of award from 2008 to 2009 for the secondary 1 student in the top 5%. Find the value of the award for a secondary 1 student in the top 5% in 2009. Means there is an increase in the value. We'll be writing what 2000 what is the value of award in 2008, what the given value is there for the secondary 1 student. So for top 5% and for secondary 1 student, the first slot which is given is mentioned for primary 1 till 6 and secondary 1 till 5. So for secondary 1, this is mentioned, the first lot is mentioned with secondary 1 student. The top 5% students are taking from the secondary 1 till 5 and primary 1 till 6. So the given value is 5,000. Value of award in 2008 is for secondary 1 student it is 5,000 rupees. So there is an increase of 30% in the value for 2009. So you will take this increase in the value and you come up with it is 5,000 plus 150. So there will be an amount of like 5,000 plus 150. So this would be the amount given to the student. There is an increase of 30%. So what amount comes or given to the students? 5,000. So this comes 1,500 more. So this would be almost 6,150. So in 2009 there is an increase of 1,500 and it comes 6,500. So award in 2009 becomes award in 2009 is this one. Like just you have to see what is the value given in 2008. The value of the award given in 2008 is this one, and there is an increase of 30% in the increase in the top 5%. You have to bother top 5%, and then secondary 1 value. This is for the secondary 1. The first lot is shown for the secondary 1 students. So the value in 2008 for the secondary 1 student is given like 5,000, and you have to take 30% of 5,000, and this comes 6,500. So this is the value to be considered from the whole data
इन लाइक 2008 में 5,000 रुपीज़ जो है वो स्कॉलरशिप मिल रहा था, और 2009 में उसमें 30% इंक्रीज हुआ. इफ़ यू जस्ट सी द table, there is like question mark for 2009's value of secondary 1 student, or the top 5 students which are taken from primary or the secondary 1. तो वहाँ से जो स्लॉट आपके पास एम्प्टी है उसमें आपने 30% इंक्रीज करके वैल्यू को प्लेस कर देना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द होल स्टेटमेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने 2008 वाली वैल्यू में 30% इंक्रीज करके 2009 की वैल्यू को वहाँ से कैलकुलेट करना है. सो बी पार्ट सेज find the percentage increase in the value. Now we'll be talking about for the next 5% of the scholarship for the students who are getting scholarship. So next 5% के लिए you have the data. प्राइमरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, primary 1 till 6 and the secondary 1, but we have to consider this one only. So I'll be writing only this one. For the primary 1 in 2008, their value is 2,500, and they in 2009 the scholarship they are getting is 3,500. So this is the required data. You have to pick and choose the required data of the question जिसके लिए आपने further solution करना होगा. So this is the required data for the primary students. These are the 4 students actually. So 2,500 से उनको उनका जो स्कॉलरशिप की अमाउंट थी वो 3,500 पे चलेगी. आपने उसकी परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करनी है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज इंक्रीज. तो अब पहले आप इंक्रीज देखें कितनी हुई है. इंक्रीज इज 1,000 हियर. इट्स ऑब्वियस 2,500 से 3,500 हो गई तो ये 1,000 रुपीज़ इंक्रीज आया. और परसेंटेज इंक्रीज किस में हुआ? 1,000. दिस इज द सेम वैल्यू. और किस में इंक्रीज हुआ था? 2,500 में मल्टीप्लाइड बाय 100% फॉर द परसेंटेज. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट कम्स फ्रॉम हियर? 40% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लाइक 2008 में आप मिल रहे थे नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स को 5% स्टूडेंट्स को, नॉट द 5-1. नेक्स्ट 5% स्टूडेंट्स जो प्राइमरी लेवल के थे उसमें उनको 2008 में मिल रहा था 2,500 स्कॉलरशिप, और 2009 में मिल रहा था 3,500. तो हमने देखना है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है. तो आई हैव टेकन ओनली द डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन. नो नीड टू राइट द होल डाटा. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन द सेकेंडरी 1 डाटा वॉज रिक्वायर्ड, और फिर उसमें 30% इंक्रीज आपने निकाल लेना है. और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ प्राइमरी 1 डाटा इज़ रिक्वायर्ड, तो आपने उसकी परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेनी है. तो दिस वॉज द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन. यू विल रीड द होल क्वेश्चन थोरोली, और फिर उसमें से अपने क्वेश्चन के मुताबिक पिक एंड चूज़ कर लेंगे क्या आपको कैलकुलेट करना है और क्या आपको गिवन है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल, and hopefully you are getting it like from the whole question. This question number 4 आपने फर्स्ट पार्ट के लिए सेकेंडरी वाला डाटा टॉप 5% के लिए वहाँ से कंसीडर करना है, एंड फॉर द नेक्स्ट 5% आपको प्राइमरी वाला डाटा जो है वहाँ से कैलकुलेट कंसीडर करना है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5. The price of meat decreases from, so prices decreases from 1,360 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ 1,360 से मीट की प्राइस जो है वो अब हो गई है 1,020 PKR. मीन्स देयर इज अ डिक्रीज ऑफ द मनी लाइक amount. What decrease is there? Whenever you have to calculate percentage increase या percentage decrease, पहले आप वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो आपके पास डिक्रीज या इंक्रीज हुई है. तो आप यू विल सब्ट्रैक्ट इट, यू कम अप विद
340 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो डिक्रीज हुआ है मीट की प्राइसेस में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो जो आपके पास सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई है दैट वन, दिस इज 340, इसको आपने जो बिगनिंग में आपके पास वैल्यू थी, इधर इट इज़ ग्रेटर वैल्यू और अ स्मॉलर वन, उससे आपने डिनोमिनेटर में आपने उसको प्लेस करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यूल यूज़ दिस साइन एज वेल। तो ये अब आपके पास आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन you can even reduce it with 2, again with the 2, otherwise 34 2 times, and this comes 5. So it is 25%. There is a decrease of 25% in the value of the meat, which was initially 1360 and now it is 1020। पहले आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके डिक्रीज या इंक्रीज निकाल लेना और फिर परसेंटेज इंक्रीज